Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Narendra Yadav. Today I am going to teach you a very important lesson which is very helpful for all those students who are preparing for government job exams or who want to improve their English. So this video is going to be very helpful for everyone. So in this video I am going to teach you about use of shall or will. So let's start this video. So students, we are going to learn about shall or will. So I am going to teach here through table, which is very important. It is called table. We can say basically it is table. So as you know that in English grammar we have three person. We have how many person we have? So we have three person: first person, second person, and third person. And after then we have two numbers also, which is called singular number and plural number. Singular number means ek vachan. In Hindi we can say ek vachan, and plural number means bahuvachan. That means many people. When we will talk about two or more than two people, then it will be called plural number. Okay, and singular number means when we will talk about only one person, then it will be called singular number. Okay, so it will be first, it will be second, it will be third. So we have three person: first, second, and third person. Okay, so first person singular number I, and first person plural number we. Okay, and second person both have same you, singular also and plural also you. And third person we have he, she, it, Ram. And plural section we have they. Okay, so basically first person, so we have one rule. Okay, no, basically you can say we have two rule. So फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल नंबर के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल के साथ हम लोग लगाते हैं सेल. क्या लगाते हैं? तो वी हैव टू रूल वन. फर्स्ट पर्सन के फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर कॉमा प्लूरल सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर के साथ सेल का यूज होता है. इज इट क्लियर स्टूडेंट? सो बेसिकली आवर फर्स्ट रूल इज फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर के साथ हमेशा सेल का यूज होता है. ओके, एंड रिमेनिंग के साथ अनदर रूल इज, सेकंड रूल इज रिमेनिंग के साथ, यानी कि बाद बाकी के साथ. बाद बाकी व्हाट विल बी? रिमेनिंग विल बी सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों? विल का लगाते हैं. सो रूल नंबर टू. सो रूल नंबर टू विल बी बाद बाकी के साथ
का यूज होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? सो बाद बाकी के साथ क्या यूज होता है? विल का यूज होता है। सो वी कैन मेक डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस जस्ट लाइक इन दिस सेक्शन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई शैल गो, आई शैल गो, ओके, दैट मीन्स मैं जाऊंगा, आई शैल गो, वी शैल गो, we shall go, and second person singular section will, we have to use will, okay, so you will go, that means तुम जाओगे, and it will be also same, you will go, okay, तुम जाओगे। Basically second person singular section and plural section both are same, okay, and third person, when we will talk about third person, then we have some subject, as for example I took here some subjects, okay, which is very very important. Now I am going to explain it, okay, now let's break down it. So he, first subject is he, so basically how we can use he basically he, we use it for male gender, मतलब पुरुष जाति के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, मेल के लिए, एंड सी इज यूज फॉर फीमेल जेंडर, ओके, तो महिलाओं के लिए इसका यूज करते हैं। एंड इट बेसिकली इट इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव पदार्थों के लिए। एंड राम, इट कैन बी एनी नॉन इन दिस वर्ल्ड, इन दिस होल द वर्ल्ड, इट कैन बी एनी नॉन, मतलब कोई भी नॉन बेसिकली व्हाट इज नॉन, सो नॉन इज ए नेमिंग वर्ड। सो दुनिया में जितने भी वस्तुएं के नाम है, वस्तुएं, स्थान, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ प्लेस, ओके, दैट इज कॉल्ड नॉन। सो इसके साथ हमेशा हम लोग क्या लगाएंगे बच्चों? इसके साथ हम लोग लगाएंगे वी हैव टू यूज विल, okay, so you should keep remember always. Basically I am teaching you not completely in English medium, it will be just like you can say bilingual, okay, so we can use will go. So here you can make four type of sentence, okay, he will go, that means वह जाएगा, we are talking about male gender, पुरुष जाति के लिए। she will go, वह जाएगी, we are talking about female, okay, and it will go, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में we are talking, okay, and राम will go, okay, राम जाएगा। and let's talk about plural section, third person plural section, in the plural section, so how we can make a sentence? so they will go, that means वे लोग जाएंगे, they will go। is it clear students? and I hope you really enjoy this video and you have learned lots of things from this video, from this little video, okay, and after finish the class, all the classes of all the parts of classes of verb, then I will discuss and we will practice together about previous questions, very very important question which was asked in SSC examination and competitive examinations. That questions will be very helpful for all those competitive examinations. So if you really enjoy this video, then please do like, share and subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon, and you can drop your feedback in comment section also. And if you really want to connect with me, really want to join with me, then you can follow me on my social media handles also. And I hope you really enjoy this video, and thank you so much for watching this video, and wish you all the best. Take care.